यार इसमें दम नहीं है, ये नीचे नीचे ये मजबूत गर्म बज रही, सीधे चले सीधे में लीजिए, चल रहा है चल दो करना थोड़ी ना है, तो हो गया हम तो ठीक है, ये हो जाएगा ना। बस मुझे इस पे डाउट कुछ नहीं स्लिप, ठीक है। क्या दब रहा है? हेलो सर, गिर जाएगा इसको सामने वाले, गिर जाएगा गिर जाएगा मोबाइल। तो कुछ लाओ, इसको निकाल लीजिए। बस अब सही है, अब कुछ नहीं होगा। अरे ये छोड़ो यार, रबड़ बैंड सर गिर जाएगा, लेकर रबड़ बैंड बस ले लो। ये है ना, ये है रबड़ बैंड, ये लो, ये रबड़ बैंड नीचे करो। हमें यहाँ से बस चिंता है, धीरे बोलो। इधर रख दो, सब दिखे। सही ना, सीधा हो गया ना, इसको उधर रख दो जिससे सब लोग देखें। जा रहा है इसका इसको डाइट कर देते हैं सर, थोड़ी डाइट कर दें, इसको निकाल, इसको हटा दें, निचोड़ा। हाँ, ये तो यही तुम्हारा निकल गया। रुको इसको सही से लगाओ, ये लगा नहीं। ये देखो, ये पहले को निकल गया। रुक गया, पहले वो रखो यार, ये मोबाइल तो पीछा छोड़ा है। इसमें इसमें ना दें, इसमें क्या है, इसी मिसिंग यार, ये अभी नहीं लगा है, ये फिक्स करना है।
छर्रा और नकर लगाया तो उससे बिल्कुल नहीं कैमरा लगाना नहीं उसका इंटरव्यू बेकार हो गया बहुत से फोन में ऐसा हो गया अभी ये प्रोग्राम बना रहा है वहीं आ गया नहीं आ रहा ज़्यादातर होता है अच्छा है आ जाए आज
तो रही है बच्चा मॉडल स्कूल से अयान शंकर एलोकेशन के लिए सेंट मैरी इंटर कॉलेज से शिवम यादव आस्था पांडे एंड जानवी सिंह फ्रॉम पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल विकास नगर ब्रांच शास्त्री पाठक सृष्टि पाठक शगुन पटेल एंड साक्षी तिवारी और तो कोई नहीं है ना आर्य गुप्ता एंड जयेश कुमार जगैश एंड फाइनली मॉन्टेसरी स्कूल शांतिपुरम ब्रांच स्नेहा यादव एंड रवि शंकर और तो कोई बच्चा नहीं रह गया ना क्या नीचे से जाओ नमस्कार मैडम।
मुझे लगता है मोबाइल ही से डायरेक्ट यूट्यूब सब लाइव इसको राधे से हम और ऊंचे हो जाएगा। वेबकैम जो है वो इसमें अपडेट कर दो। बस ये वाली यहाँ पर है आ जाए ठीक है, तुम वहाँ से जैसे ही आता है हम उसको तुरंत करता हूँ। वही प्रोसीजर इसीलिए बोला जो हमारे पास में सही है। कौन सा मोबाइल आएगी? आई सही फिल्टर लगा देना फिल्टर। हाँ गले में टांग लो। हाँ एक दो तीन यहीं से कहने
वेट वेट चलो तो ये जो वो बाढ़ का वेट एक बजे के बाद याद रखो तो अपने हिसाब से करो कहीं नहीं वो क्या करे पैसा हमने दिया पैसा हमने दिया हम प्लानिंग के लिए लाइव कर रखा है कल लाइव वहाँ से सर्वर जा रहा है सेकंड में लाइव आने वाला तो है तो आप हाँ बच्चे अगर नहीं आने आएंगे डबल हो जाएगा टाइम है ऐसा ही काम करना not exactly how do you implement it is an implementation वो भी अंदर बस वो जीएसटी का वेबसाइट पे है ना वो एनएचसी वाले कल की फॉरेस्ट्री चालू हुई ठीक मैं इसको करता वो प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली हम लोग को मतलब अक्टूबर से तो काम ही शुरू कर देना है क्योंकि बस हम लोग को मानसून के करना है हो नहीं कर
सर वो एक इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है यूपी का, वो तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हो गई ना। हाँ ओके ओके सर, हम 5-10 मिनट में आपको कॉल करें। हाँ ओके सर, ओके सर, ओके ओके। वो ट्रेनिंग हेड से सर ऐसा मिल जाएगा। वो तो मेरा है उससे लगा है, लेकिन वो खराब है सर, उसमें उल्टा लोगो है, वो किसी को तो चिपका लगा हुआ है। सर, वो उल्टा लोगो है, वो नहीं चाहिए उसमें, जैसे चक्की में जो भी ऊपर उल्टा लोगो लगा है, वो मत लगाए, वो तो लिखा है ना। इसीलिए मैं तुरंत उसको छोड़वाया। हाँ वही ऊपर आप लोगों का
ये 16 में 2022 आज के वक्त इस्तेमाल ही नहीं क्या होता है किसका लोग भारत के नक्शा ही सब तो मेरा फिर उल्टा हो गया बताते हो ना किसी ने पॉइंट आउट किया क्योंकि सर इसमें जो है ना वैसे लोगों में रीजनल साइंस हो चुकी है हमको हम कैसे पता लग रहा वो जैसे नहीं इन्वाइटेड हो गया किससे वो करते हो ना कभी कभी इधर उधर ट्राई नहीं ऐसा नहीं हाँ जब उसको कैसे करेंगे हाँ तब चीज़ भाई इसका सवाल क्या रहा Sarabhai Chapter. साउंड नहीं उसके बाद चलता भाई चल आवाज बहुत कम हाँ हाँ
Thank you everyone and welcome to all.
आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ जन का गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। आदार अभिनंदन, नमस्कार। Hello and a very good morning to everyone. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. I am Dr. Singh and today I have the pleasure of being your host for this day. आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में करना चाहूंगी। सबसे पहले आपका फिर से पुनः मैं स्वागत करना चाहूंगी नेशनल रिमोट सेंसिंग डे के तत्वाधान के तहत आयोजित कार्यक्रम में, जहां पर मिलकर हम आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहती हूं हमारे केंद्र के निदेशक महोदय डॉक्टर पी कुंवर सर का, कि वो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे केंद्र के निदेशक महोदय डॉक्टर पी कुंवर सर का, कि वो मंच पर आसीन होने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री सुशील चंद्र सर का, कि वो अपने स्थान को आकर ग्रहण करें। एक बार सर का जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी मैडम से, वाइस चेयरमैन इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग लखनऊ चैप्टर से, कि वो स्थान आकर ग्रहण करें। स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के नाम पर होती है, तो आइए उसी खूबसूरत सी परंपरा के साथ सबसे पहले वंदन है माँ शारदा की। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे केंद्र के परियोजना वैज्ञानिक मिस प्रांजलि त्रिपाठी, डॉक्टर परिधि नागियान, मिस प्रीति चतुर्वेदी और मिस दीपशिखा। प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरे शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। लीला वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीरावादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, तू ही
शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तेरी कृपा से कला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में, रंग खिले तस्वीरों में, रंग खिले तस्वीरों में। तू सतरंगी जीवन करती, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में। जग में ऊंचा नाम रहे माँ, ऐसी युक्ति लगा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जब जब बोलूं कोई वाणी, अमृत की बौछार लगे, अमृत की बौछार लगे। मधुर वचन हर मन को भाए, वीणा की झनकार लगे, वीणा की झनकार लगे, वीणा की झनकार लगे। कंठ बसो मात शारदे, मीठे बोल सिखा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। थैंक यू एवरीवन। कार्यक्रम की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर पूनम वार्ष्णेय मैडम को। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डाइस पर हमारे केंद्र के निदेशक महोदय डॉक्टर पी कुंवर सर को कि वो डाइस पर आए और कुछ शब्दों से अपने केंद्र के बारे में प्रकाश डालें। सर्वप्रथम केंद्र में आए हुए बच्चों को, उनके टीचर को, सबको मैं स्वागत करता हूं केंद्र में। और रिमोट सेंसिंग जो आज मनाया जा रहा है विक्रम साराभाई के जन्मदिन पे है, और हम लोग हर साल मनाते हैं। कोविड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, उतना नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोग कंपटीशन दें और सब चीज़ें, बच्चे जो आए हुए हैं। और विक्रम साराभाई का 103 जन्म दिवस का है ये प्रोग्राम। और विक्रम साराभाई हमारे रिमोट सेंसिंग अपनी जो है रिमोट सेंसिंग के जनक माने जाते हैं। रिमोट सेंसिंग आप समझ लीजिए कि वो उस समय बैलगाड़ी पर जो है रख करके सेटेलाइट ले जा रहे थे। उस समय लोग सोचते थे, विदेश में लोग सोचते थे कि सेटेलाइट जो है उस पर ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी में ये देश क्या करेगा। लेकिन आज हमारा देश इस ढंग से हो गया है कि वर्ल्ड में तीसरे पोजीशन पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में है। और हम लोग रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का हम लोग एक पार्ट हैं, जिसमें हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग रिमोट सेंसिंग के वो पार्ट हैं, जो कि उनके द्वारा जो है सेटेलाइट डाटा जो मिलता है उस पर हम लोग काम करते हैं। विभिन्न जो है रिसोर्स में हम लोग काम करते हैं, जैसे फॉरेस्ट में है, एग्रीकल्चर है, सॉइल है,
वाटर है, वाटर में हम लोग जो है उसके नीचे का फिर पानी के बारे में पता करते हैं कितने नीचे पानी है, वहाँ पे ड्रिलिंग टेबल लगाए जाएंगे कि ना लगाए जाए। इसी ढंग से एग्रीकल्चर में जो है उसको क्रॉप कटने के पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि कहाँ पे कितना जो है क्रॉप हो रहा, पोटैटो का हो रहा है या धान का हो रहा है या गेहूं का हो रहा है, ये सब पहले से फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और फॉरेस्ट में हम लोग ये पता करते हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट लगाया जाए, कहाँ पे है। आप देखेंगे ट्री आउटसाइड, जो फॉरेस्ट के बाहर जो है जंगल बहुत हैं, लेकिन उसकी मैपिंग नहीं होती है, तो उससे भी हमारे टिम्बर का बहुत ज़्यादा फायदा, उसकी भी मैपिंग हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ जो है जिलों में किए हैं। दूसरे ब्रिज के लिए हम लोग कहाँ पॉइंट देते हैं, कहाँ ब्रिज होना चाहिए, पता लगा कुछ जगहों पे ब्रिज दिया, ब्रिज जो है बह गया नदी में, तो वो भी हम लोग माइग्रेशन देखते हैं, रिवर की माइग्रेशन किधर जा रही है, उस ढंग से काम करते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर पूरा डेटा सेंटर है जिसमें कि GIS एप्लीकेशंस के लिए पूरा GIS है और GPS भी है हम लोगों के पास, और DGPS भी है कि जो आपका सेंटीमीटर लेवल तक की एक्यूरेसी का काम करता है, और बैथीमेट्री है जो कि जल के नीचे का भी हम लोग जो है सर्वे करते हैं, और वहाँ पे कंटूर वगैरह का कितना कंटूर है वो सब करते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास जो है मोबाइल लिडार भी है, जिससे हम लोग पूरी मतलब इंडिया में पहला रिमोट सेंसिंग होगा जहाँ पे मोबाइल लिडार है फैसिलिटी। उससे हम देख लेते हैं कि 3 डायमेंशनल कहाँ पे रोड बननी है, कहाँ के पेड़ कटने या कुछ भी, या बिल्डिंग कौन से रोड में आ रहे हैं, ये सब की मैपिंग हम लोग करते हैं। तो देखा जाए तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर विक्रम साराभाई की देन है, जो जनक हैं, और हम लोग तो उनके समझ लीजिए पीढ़ियों हैं, जो कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे हमारे 2 निदेशक भी बैठे हुए हैं, जो हमारे जिस समय हम लोगों ने ज्वाइन किया था, डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर सिंह दोनों हैं आज हम लोगों के सामने। उनको मैं जो है नमस्कार करना चाहूँगा, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, और हम लोग तरक्की करें और एक दूसरे के साथ मिलकर के हमेशा काम करते रहें। आज हम कल भी हमने बोला था कि हम लोग अगर करेंगे तो देश के डेवलपमेंट में एक काम आएगा। चाहे सिंह साहब उस समय थे, वो सोडिलैंड डिक्लेमेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, वो जो है कलाम साहब अपनी बुक में लिखे हैं हमारे रिमोट सेंसिंग का। तो इस ढंग से देखा जाए तो हम लोग एक ऊंचाई पे पहुंचे हैं, और हम चाहेंगे और हम लोग ऊंचाई, और इसी कुछ समय में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक फॉरेस्ट का एटलस हम लोग यहाँ पे विमोचन करें, जिससे कि फॉरेस्ट का एटलस यूपी का वो काम किया जा सके। और हम लोग यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एमटेक का भी क्लास लेते हैं। यहाँ पे एमटेक की हमारे यहाँ 2013 से चल रहा, और बहुत बच्चे पास होकर के निकल गए। कुछ बच्चे यहीं पे रिमोट सेंसिंग में ही नौकरी कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग उस डायरेक्शन में भी एजुकेशन के डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो इस सबको देखते हुए आज हमें विक्रम साराभाई का जन्मदिन तो एक दिन आता है, लेकिन हमें रोज सोचना चाहिए कि हम रिमोट सेंसिंग को कैसे आगे ले जाएं और कहाँ ले जाएं, अपनी देश को, प्रदेश को और अपने केंद्र को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर MS यादव सर को कि सर प्लीज आप डाइस पर आएं और आज के इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने की कृपा करें। थैंक यू डॉक्टर गीतांजलि। आज के इस रिमोट सेंसिंग डे में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे साथ डॉक्टर EN सिंह साहब, डॉक्टर शुक्ला साहब, श्रीवास्तव साहब यहाँ मौजूद हैं हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। मैं केंद्र के निदेशक महोदय श्री सुशील चंद्रा साहब, हमारी उपाध्यक्ष डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी साहब और अपने सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुख्य रूप से मैं आज स्वागत करता हूँ अपने सभी छात्रों का, जो बहुत दूर से आए हैं, और मुझे लगता है वो इतने पंचुअल हैं कि हमने 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू किया था और 10 बजे से पहले ही से वो लोग आने लगे। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे छात्रों के लिए एक बार लोग तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। और मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैं छात्रों के लिए 2 शब्द जरूर बोलूँगा।
मुझे ऐसा लगता है, मैं आप सभी छात्रों से ये कहना भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऊर्जा के स्रोत हैं। आपको आज ये डिसाइड करना है कि जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अगर आप ठान लेंगे तो वो नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूँ, मैं आप में भविष्य का कलाम देखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत और जो भी लगनशीलता से काम करेंगे, निश्चित रूप से आप उसमें सफलता पाएंगे। तो मुझे को लगता है कि आज का रिमोट सेंसिंग डे हमारा जब भी सफल होगा कि जितने भी छात्र आए हैं वो यहाँ पे, मुझे लगता है कि पुरस्कार काफी लोगों को मिलेगा। 15 बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे आज के कार्यक्रम में। सर्टिफिकेट सभी बच्चों को दिया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2021 में सर कार्यक्रम किया था, तो वो कोरोना होने की वजह से उन्हें पुरस्कृत नहीं कर पाए थे, तो उन्हें भी आज हम पुरस्कृत करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि सभी छात्र, हमारे लिए सभी छात्र बहुत अच्छा बोलेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैं पुनः सभी छात्रों को बहुत बधाई देता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर पूनम वार्ष्णेय मैडम को कि वो डाइस पर आए और आज की एलोकेशन कॉन्टेस्ट कराने की कृपा करें। Thank you, Ritanji. Without wasting a time, I would like to conduct a allocation competition. So, the topic of the space allocation competition is space technology in independent India. The first one I would like to Ayan Singh from the model school. The time limit is 5 minutes, and please try to complete within the 5 minutes. Very good morning to one and all present here. This is Ayan Singh of grade 10th representing modern school, and I am here to view my thoughts and express my thoughts on the topic space technology in independent India. So from the day one, from the start, space technology industry has been a very competitive market. Countries have been developing best and the most effective technologies and pushing the boundaries of what human can achieve. But one country which is often not mentioned in the history of spaceflight programs is India. When India started their space program, it was ISRO. So it was started in 1969, and from the start, it was a very competitive, and the space technology was dominated by Russia, which was known as Soviet Union at that time, along with America. NASA's budget on that time was around $40 billion in today's money, whereas India came with a budget of only $1 billion, which is just a fraction of what NASA has. But to make an impact in the space community, ISRO had to be smarter and be effective and efficient in their mode of transmission. So, after the first satellite, the first launch vehicle used by India was the SLV, which was the satellite launch vehicle. It had the capability of putting a payload up to 40 kilos in the low Earth orbit. So the start of the ISRO was extremely humble. The rocket parts were transported by bikes, and the bigger parts like satellites and rocket parts were transported by bull carts. But now the times have changed. You know, PSLV, the Polar Satellite Launch Vehicle, it is the most efficient, it's a workhorse for ISRO. When launching a satellite by the Indians, it is 70% cheaper than the other options from other countries. India has proved that they are capable of launching cheaper rockets, the cheaper satellites at a lower rate. And the best competition for India is SpaceX, an American-based company. They use the reusable rockets. So India has a basic theme of pairing a high ambition with a low budget. India has seen an ambition of going to the moon and Mars, which they have done by their orbiters like Mangalyaan, Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2. Mangalyaan was launched in 2013. It was inserted in the orbit in September 2014, and it made India the only fourth country to achieve the orbit of Mars, and it was the first country who did it in the maiden attempt. So although India's capabilities are not scalable with NASA, but what we have and what we achieve is completely scalable with NASA. We have a very lot less budget, but our effectiveness is what makes ISRO a key player in the world space organizations.
So India's rockets are effective because we use mostly in-house, inbuilt and local companies' products, which makes the overall cost reduced by 50%. Thank you. The next participant is Alok from the modern school. यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनिरुद्ध श्रीवास्तव मॉडर्न स्कूल कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आप विचार करिए, विश्व थम गया है। आप अपने मोबाइल पर वार्तालाप नहीं कर सकते, रेडियो सुन नहीं सकते। भारत की समस्त सुरक्षा प्रणाली भेदी जा चुकी है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, हर प्रकार से संचार व्यवस्था चरमरा गई है। इसके परंतु आप इन सब विचारों से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये कभी सत्य नहीं होने वाले। जब तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज इस देश में है और जब तक रहेगा और आने वाले अनंत दिगंत तक रहेगा, तब तक इस प्रकार के संकट भारत को छू भी नहीं पाएंगे। आज हम लोग इस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार बैलगाड़ी से शुरू हुआ ये सफर, ऐसा थुम्बा गांव से शुरू हुआ ये सफर श्रीहरिकोटा तक जा पहुंचा है, जिसके बीच श्रीहरिकोटा में आज वो एक वृक्ष बन के सबको फल दे रहा है। 1957 में एक स्पेस रेस हुई थी यूएसएसआर, जिसको हम लोग यूनाइटेड सोवियत यूनियन कहते हैं, और यूएसए के बीच में वो एक शीत युद्ध होता था, जिसके अंतर्गत 1957 में प्रथम सैटेलाइट स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण किया गया था रशिया के द्वारा। इसके बाद पंडित नेहरू 1962 में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अंतर्गत विक्रम साराभाई, इनको स्पार्क का गठन हुआ था और विक्रम साराभाई उसके चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किए गए थे। नाइक अपाचे दिनांक थी 21 नवंबर 1963। नाइक अपाचे नामक एक अमेरिकी निर्मित रॉकेट थुम्बा से लॉन्च किया गया। बैलगाड़ी का यह सफर जीएसएलवी तक जा पहुंचा। 1965 में एसएसएस की, 1967 में एसएसईबी की स्थापना हुई। सन 1969 में इसका पुनः नामकरण किया गया, जिसका नाम था इसरो नाम था, परंतु भारतीय अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाली इस संस्था ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, कम समय और कम संसाधन में प्राप्त करी। और फिर आरंभ हुआ वह स्वर्णिम युग, जिसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वह स्वर्णिम युग जिसके बाद आज समस्त भारत विश्व में तीसरे पायदान पे खड़ा है, और आज हम लोग अंतरिक्ष की महाशक्ति बन के A-SAT मिसाइलें तक लॉन्च करने की हम लोग क्षमता रखते हैं। 1975 में भारत में निर्मित प्रथम आर्यभट्ट नामक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया। यह पूर्णतः स्वदेशी था। अर्थात आज जब हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, जिसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत पे पूरी तरीके से जोर दें, क्योंकि यही हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि भारत हमेशा से आत्मनिर्भर बने, हम लोग दुनिया को एक्सपोर्ट करें, जैसे हम प्राचीन काल में करते हैं, तो विश्व गुरु बन के रहे हैं। उपलब्धियों के इस दौर की शुरुआत हुई, जिसके आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई और आत्मनिर्भर भारत की जो महान सोच है, उसको हम लोग ने इसके हिसाब से इसके संपूर्ण भारत का विश्व में कीर्तिमान रचा। 1980 और 1981 में डॉक्टर रविशंकर चतुर्वेदी, जो कि अभी जो कि वहाँ के फाउंडर डायरेक्टर भी रह चुके हैं इसरो के, और यहाँ रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर चुके हैं, SLV-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया और रोहिणी प्रथम को अपनी धुरी पर स्थापित किया गया। 1982 INSAT-IA, 1984 राकेश शर्मा का अंतरिक्ष भ्रमण और सारे जहां से अच्छा ये इंदिरा गांधी जी को उनका दिया हुआ उत्तर था। 1987 में ASLV-S क्रॉस प्रथम, 1988 में IRA-IA, 1991 में IRSIB प्रथम और 1992 में ASLV ऑग्यूमेंटेटिव सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1993 में उसका प्रक्षेपण किया गया। और इसके तत्पश्चात PSLV का निर्माण किया गया 1994 में। PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या थी? ये एक स्वर्णिम क्रांति थी। PSLV जिसके द्वारा हम लोग ने मंगलयान 2013 में, चंद्रयान प्रथम, ये आदि कई कितने बड़े बड़े मिशनों को इसी से अंजाम दिया है हम लोगों ने। PSLV एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। 1996 PSLV-1 RS-1D और 1997 PSLV RSI-1D, जो देश में अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु अन्य देशों पर निर्भर हुआ करता था, जो देश दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, आज वो देश 1999 में विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? फर्श से अर्श तक का यह सफर अब 21वीं शताब्दी तक जा पहुंचा था। 2001 में GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल प्रक्षेपण किया गया। 2008 में चंद्रयान प्रथम मील का पत्थर साबित सिद्ध हुआ।
चंद्रमा पर जल की खोज भारत ने ही की थी और इससे अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा ही मिल गई। मानो मानो हर तरफ, और वहां पर हम लोग ने चंद्रमा पे अपने तिरंगे को भी लहराया। भारत की शक्ति का सबको अंदाजा हो गया था। अब मंगलयान ने भारत को प्रथम प्रयास में मंगल तक पहुंचाने वाला देश बना दिया था। संसाधनों की कमी के बावजूद इस स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया मात्र $17 मिलियन, जी हाँ, मात्र 17 मिलियन, $74 मिलियन में हम मंगल तक जा पहुंचे। ये इंटरस्टेलर की भी कॉस्ट से कम था एक्चुअली। एक मूवी हुआ करती थी इंटरस्टेलर, उसके पूरे बजट से हम लोग ने उसको कम में मंगल और चंद्रमा तक पहुंचा दिया था। इसरो की खास बात यह है कि वो कम संसाधनों में बेहतर परिणाम दे सकता है। 1917 में 104 विदेशी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में एक बार में ही भेज देने का हम लोग ने कीर्तिमान रचा है। 2019 में मिशन शक्ति, DRDO, HAL, साथ ही साथ इसरो ने मिलकर 300 किलोमीटर भारत के संपूर्ण अंतरिक्ष के 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हम लोग ने अमेरिका, रशिया, चीन और अब भारत महाशक्ति बन चुका है। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग युद्ध 2 प्रकार फ्रंटियर्स पे करेंगे, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, एक देश के अंदर, एक देश के बाहर, परंतु मैं मानता हूं तीसरा भी एक फ्रंटियर होगा, वो है अंतरिक्ष में। वहां पर भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरना होगा। जिस प्रकार अब्दुल कलाम कहते थे कि हम युवाओं के अंदर वो सामर्थ्य है कि हम लोग इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। एक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत संपूर्ण विश्व में अपनी पैठ बना चुका है। आज 1963 का वह बीज वृक्ष बनकर सबको मधुर फल दे रहा है। आइए भारत के अंतरिक्ष प्रोग्रामों का वर्णन भी कर लेते हैं। क्रायोजेनिक इंजन एक बड़ी सफलता थी जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान को दिशा मिली। यह पूर्णतः स्वदेशी था। 1983 INSAT-IB, INSS, RIST रेडार इमेजिंग, स्वदेशी जीपीएस, जी हाँ, स्वदेशी जीपीएस। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, भारत आत्मनिर्भर है। स्वदेशी जीपीएस, IRSS, सीमा सुरक्षा हेतु नेवी, ये भारतीय नौसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कैटोसैट रिमोटिंग तथा संसाधन व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। एमिसैट की बात की जाए, GSAT 7, 7A आदि, ये सब देश के हर महत्वपूर्ण विभाग के मुख्य स्तंभ हैं। जैसे अगर मैं नाम लेना चाहूं, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन, रेडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग, भौतिकी विकास, मौसम, सीमा सुरक्षा, अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन, संचार, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग आदि कई विभागों का मुख्य स्तंभ है इसरो तथा उसके ये प्रोग्राम। देश गौरवपूर्ण 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस 75 वर्षों की यात्रा में इसरो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रम से सब कुछ संभव हो सकता है। जिस प्रकार से डॉक्टर सर ने जिस प्रकार से बोला है कि यदि आप किसी भी चीज को ठान लें तो आप उसको पूर्ण करके रह सकते हैं, इसी बात को इसरो ने सिद्ध कर दिखाया है। आने वाले वर्षों तक यह संपूर्ण विश्व में कीर्तिमान होगा कि भारत के अलावा और कोई राष्ट्र हमसे आगे नहीं हो पाएगा। आप सभी को प्रणाम करते हुए और अपनी स्पीच को एंड करते हुए भारत माता की जय। क्षमा चाहूंगी मैं। 51 में हमारे केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर MS यादव सर और इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन सर को आमंत्रित करना मैं भूल गई थी, तो मैं एक बार सर को स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ। सर प्लीज एक बार सर का जोरदार तालियों से अभिनंदन। The next participant is Shri.Uma from St. Mary College. मेरा सबसे अनुरोध है कि प्लीज समय का ध्यान रखें। टाइम लिमिट है 5 मिनट्स, तो उसी में अपना कंप्लीट करें, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। A very good morning to all. Myself Shri.Uma of St. Mary's Inter College, Jankipuram, Lucknow, is here to present my own view on space technology in independent India on this auspicious day of remote sensing day. The space technology in independent India. The main space research organization, that is ISRO, Indian Space Research Organization, has completed 166 missions, out of which 53 missions have been accomplished during the period of May 2014 to April 2018, that was the golden age of APJ Abdul Kalam's era. Space technology includes space vehicles like spacecraft, satellites, space stations and orbital launch vehicles.
The first country all over the world put technology into space was USSR, Union of Soviet Socialist Republics. USSR sent the satellite Sputnik 1 on 4th October 1957. Humanity has achieved space flight, but only few nations have the technology for the orbital branch. That are USA, NASA, the member of European Space Agency ESA, Japan, JAXA, China, and India, ISRO. Thus, India also come in the above list, and this possible because of some famous scientists, Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Jayan Nirlakar, Dr. Manmohan Singh, and our famous missile man. Because of these scientists' hard work, determination, India also becoming a part of technical development. For the development of India in various fields, that is in defense technology, that is DRDO was set up in 1958 under the able leadership of Homi Bhabha. With more advanced defense technology by electronic warfare, armored vehicles system, various projects like Agni Project 1989, first India's rocket launch on 1963, and then formation of ISRO in 1969 with vision of developed nation under able guidance of Dr. Vikram Sarabhai. Chandrayaan 1 has launched in 2008 and Mangalyaan 2013 launched by ISRO. From my vision, as in 15th August 1947, we got independence from Britishers and become free. This is again a big challenge to boycott foreigners by working for them and contributing in their projects. From their nation setups, not us. What was India? Now because of some great scientists who work for India refuses NASA, CNSA and even others. And what we will be now depend upon Indians. Think how much one can stand alone and work for the whole nation. But if every citizen, not every, but if 50th citizen of India work for his or her nation, the nation will become very developed even from USA, China and Russia too. Work for our nation, a time comes when the visit India not for picnic or tour but for jobs too. Thank you. Next is Astha Pandey from St. Mary Inter College. Good morning everyone. Myself Astha Pandey of class 10th from St. Mary's Inter College. As India completes 75 years of its independence and we are here to celebrate the National Remote Sensing Day, it is the time to introspect country's space programs that has grown and evolved significantly in the last decades. So I'm here to speak about the space technology in independent India. Over time, India has been fairly successful in its space exploration and other high-profile missions, and its space programs has become a comprehensive one that includes not only a robust launch capacity and a very large remote sensing satellite systems, but also a very well-rounded scientific and deep exploratory missions. So this journey began as the first step when the Department of Atomic Energy formed the Indian National Space Research Committee by the Government of India in 1962. And with the efforts of the space visionary Dr. Vikram Sarabhai, on 15th of August 1969, the Indian Space Research Organization was established. It is one of the 6 largest space agencies in the world today. The prime objective of ISRO is to develop space technology and its applications for various national needs. As India, the country of Dr. Vikram Sarabhai, Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. C.V. Raman, Dr. Stacey Thompson, and many great scientists. With the tireless efforts of Indian space scientists, India's first space satellite, Aryabhat, was launched by the Soviet Union on 19th of April 1975, which was really a great achievement for us. Indigenous launch vehicle SLV-3 was made for the launch of Bhaskar and Rohini satellites. In 1984, Air Force pilot Rakesh Sharma became the first Indian to go into space riding in Soviet spacecraft. Today we have become self-reliant, and due to our self-reliance in this field, at present, the best indigenous technology-based launch vehicles have been manufactured under Make in India program.
we have successfully launched ambitious satellites like Chandrayaan and Mangalyaan. As a result, we became the first country to launch Mangalyaan into space at the lowest cost in the first attempt. Indigenous launch satellites SLV and GSLV have been made by Indian scientists by using modern technologies. And Dr. APJ Abdul Kalam's contribution to make a self-reliance in the technology of rocket manufacturing will always be remembered. Chandrayaan, once launched, signaled the beginning of India's first ever lunar program, and later many other great achievements of launching Mangalyaan, Gaganyaan, Chandrayaan-2 and GSAT-11, which is one of the heaviest rockets produced by ISRO, weighing around 5,854 kgs. ISRO's Earth observation and meteorological satellite system is fully developed. ISRO has successfully launched 450 satellites till date, in which 269 satellites are from 32 overseas countries. With all these great achievements, ISRO is marching towards its ambitious India's human-made spacelift mission Gaganyaan by 2023. Eventually, we all should express our gratitude to Dr. Vikram Sarabhai, who took us on the path of all these outstanding accomplishments. The achievements of ISRO really inspire us as India marches ahead to excel new heights in the field of space science. Thank you. Next participant is Singh from St. Mary Inter College. Please समय का ध्यान रखें. Greetings of the day. I'm Janvi Singh, a student of class 10 from St. Mary's Inter College, Chankipuram, Lucknow. Today, I'm blessed by having given an opportunity to deliver a speech on this wonderful topic of space technology in independent India. So, may I ask a question? Have you ever heard about this man who is known as the father of Indian space program internationally? The same man who orchestrated the foundation of Indian National Committee for Space Research? Well, that man is none other than Dr. Vikram Sarabhai. India is a developing country. She has developed in a considerably high amount over the past 75 years of independence in variety of fields. One such field is space technology. So, why did I talk about Dr. Vikram Sarabhai in the beginning? Well, Dr. Vikram Sarabhai had contributed a lot to space technology. How? Well, first, he is the founder of INCOSPAR, what we know today as Indian Space Research Organization. Second, India's first unmanned satellite, Aryabhat, launched on 19 April 1975, was built by the team of scientists led by Dr. Sarabhai. Third, is also a third reason in which we are gathered today to celebrate National Remote Sensing Day, which is observed every year on 12th of August, which is also the birth anniversary of Dr. Vikram Sarabhai. Like him, many other scientists have contributed greatly to this field. I would like to list some prominent names such as Dr. C.V. Raman, Dr. Homi Bhabha, Dr. APJ Abdul Kalam, and many others. Let's talk about Chandrayaan first, India's first mission to moon. It was launched on 22nd October 2008 from Sriharikota in Andhra Pradesh. Mars Orbiter Mission, MOM, also known as Mangalyaan, was launched on 5th November 2013. It was India's first interplanetary mission. It studied about Earth's neighboring planet, Mars. Let's talk about India's second mission to moon, Chandrayaan-2. It was launched on 22nd July 2019, but it was, however, unsuccessful. But we know about the saying, failure is an opportunity to begin again more successfully, and that's what Indian scientists will do. Indian scientists are planning to launch Chandrayaan-3 in 2023. The young generation of our country wears bright minds which can take India to the next level by imagining beyond limits. Ending my speech, I would like to quote Dr. Vikram Sarabhai. He who can listen to music in the midst of noise can achieve great things. Thank you. Next
one is Shri Pathak from Pioneer Montessori School, Vikasnagar. Good morning to one and all present here. Today, I, Shri Pathak, is here representing Pioneer Montessori School, Vikasnagar, Lucknow, on the occasion of National Remote Sensing Day. This year, we are not celebrating India's independence as Independence Day, but as Azadi Ka Amrit Mahotsav. But why? This is because we are not celebrating only one day achievement, but we are celebrating our freedom of 75 years. For a young nation to be courageous enough to shed the tag of a third world country and to establish oneself on a global pedestal as the land of doctors, engineers and scientists is no small feat. Over the years, as ISRO, DRDO, AIMS and IITs became household names, the places where dreams get wings, the places which lay the foundation of a scientifically sound and self-reliant India, the flame of glory has only burned brighter. For further research, with the help of Dr. Vikram Sarabhai, the Indian Space Research Organization, ISRO, was set up in 1969. Aryabhat, the first Indian satellite, was launched by Soviet Union in the year 1975. At present, ISRO has conducted two successful space projects, namely the Chandrayaan and the Mangalyaan mission in the years 2008 and 2013 respectively. At present, our two main priorities are the Chandrayaan-3 and the Gaganyaan mission. In Dr. Kalam's India, in the vision of M.S. Swaminathan, in the works of Homi Bhabha and Dr. Sarabhai, and the efforts of Rajkumari Amrit Kaur and other countless, scientific attitude and aptitude have known no bounds. Innovation and invention, research and implementation have laid down the foundation of an India which has and will continue to inspire others. From launching communication satellites with limited resources to implementing the Green Revolution, which now enables us to import in quintals, and from establishing a comprehensive network of atomic energy to the manufacturing of nuclear weapons. We have come a long way since the invention of zero. Shielding women against anemia with integrated birth control to the development of Saheli. Scientific advancement has bloomed in biology as well. By popularizing the green, the blue and the white revolutions, we have inculcated a scientific temperament in thousands of young minds. The Chandrayaan mission has made India a part of the space rush. The Mangalyaan mission has been adulterated far and wide for its indigenousness and all people that how one can send a satellite to another planet on a budget less than it took to make the Hollywood movie Gravity. Dr. Khorana's contribution to DNA fingerprinting has immortalized a scientific zeal in students of the nation. The feat that is to be declared polio-free and being one of the few newly independent nations to have a juggernaut IT sector is commendable and impacts the life of every Indian, all the while generating revenue and boosting the economy. Necessity is the mother of invention, is a dictum oft heard, and India over the years have proven it to its core. With the myriad of scientific schemes and their widespread implementation, we as a nation have proven that no amount of money can match the zeal one has for innovation. Case in point, the Mangalyaan mission. Thousands of students all over the country aspire to do something in the field of science and in turn inspire those to come. I, Shri Pathak, wholeheartedly believe that we as a nation
have a lot to accomplish in technology and slowly are inching towards it. Till then, I wait for my experiment to produce the desired results. Thank you and have a wonderful day ahead. Next is Shagun Patel, Pioneer Montessori School, Vikas. Good morning, everyone. I hope you all are well. My name is Shagun Patel, and I am the student of Class 9 English Medium. I study in Pioneer Montessori School, Inter College, Vikas Nagar, Sector 1, Lucknow. And today I am going to represent here about space technology in freedom of India. Space technology. In space technology, we found many discoveries, like we found life on Mars, water on Moon, and several soft discoveries. Well, space technology helps us in many ways. Space technology includes space vehicles such as satellite, spacecraft, and orbital launch. The space technology invented on October 4, 1957. Well, the Chandrayaan was a mission, the first Indian mission to the moon. Hubble telescope. The Hubble telescope was invented in 24 April 1990. It is found by Edwin Hubble. Well, Hubble telescope give us many new things and help us to found many new discoveries like galaxies, new planets like exoplanets, and several of things. Well, space technology give us many benefits like improving our day-to-day life, improving our health, it protect our planet and our environment. Thank you for listening. Have a nice day. Sakshi Tiwari from RLB, Vikas. Good morning, everyone. This is Sakshi Tiwari from RSD Vikas Nagar, Lucknow. Today I am here to present a brief account on how our Indian Space Department has developed after its independence. I would like to begin with a famous quote. Sky is not the limit because we have footprints on the moon, and we have definitely transcended the barriers of the sky and contributed significantly in exploring the world. But the journey of our space research has been quite a difficult and gradual one. As India completes 75 years of its independence, it is now time to introspect the country's space program that has grown and evolved significantly in the last decades. India gained independence in 1947, but the British left India as a poor and backward country. We know that any space program, be it on a small or on a large scale, requires a lot of finance to be undertaken. And India, being an underdeveloped country, we had to access other countries which had expertise in technology. But over the last few decades, our country has transformed into an economy which can support such missions and has developed its own stable structure, making India independent technologically. Today, India has developed in every field, thanks to the hard work and determination of our scientists like Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Vikram Sarabhai, and many more. Their work has brought India into the space communication era. India today is at par with various countries like Russia, America, Canada, and Japan. India's space journey began in 1975 when the first spacecraft Aryabhat was established in the Earth's orbit. It was a great success. Taking the next step, in 1979, Bhaskar, prepared by the Indian Space Research Organization, was released. Next was the Rohini satellite, which was placed in the Earth's orbit by SLV in 1980. SLV-D3 was launched from Sriharikota on May 20, 1992 and was successfully placed in the Earth's orbit located at an altitude of 450 kilometers. In recent times, ISRO has conducted two successful programs
namely the Chandrayaan and the Mangalyaan in 2008 and 2014 respectively. Also, this Mars orbital mission became the first Asian spacecraft to complete this mission, and India became the very first country to succeed in this mission in the very first attempt. Thus, India added another story of success in the history of science. At present, our main priorities are the Chandrayaan 3 and the Gaganyaan mission. India wants to launch its first manned space mission in 2022 to mark the 75th anniversary of nation's independence. ISRO says that this mission will be the first step toward building India's own space station, which it plans to do in the next 5 to 7 years. But among all these achievements, the most prominent one is the healthy participation of today's youth in this. Yes, today many people in the younger generation of India, they dream and aspire of contributing in the aerospace field, as they not only want to make progress but also want India to establish its supremacy across the world in this field. The young minds of India not just see space as a field in which they can become professional, but for them it is life. And I would like to end with a quote: space traveling is life enhancing, and anything which is life enhancing is worth doing because it makes us all want to live forever, and such is the mindset of our upcoming generation. Thank you. One trust from Allen House Public School. Super afternoon to one and all present here. Today I am Vanshaj Gaur of Allen House Public School, Lucknow, going to tell you about space technology in independent India. Developing India, the country of Kannad, Vishwamitra, C.V. Raman, and last but not least, India, the country of Dr. APJ Abdul Kalam. Comprising 17% of the world population, it is one of the most densely populated countries in the world. After nearly 2 countries of despotic British rule, India gained independence in 1947. The British left India as a poor, dependent, and economically backward nation. It was the vision of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, and the need of India at that time that led to the foundation of Indian Institute of Technology in 1950 after only 3 years of independence. These institutes, with assistance from international institutes, promoted the research in India. The Department of Scientific Research and Natural Resources was also set up by him. The Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, also expanded during this time due to the initial of Shanti Swarup Bhatnagar, who is properly known as the father of Indian research laboratories. Development in defense technology, valuable India, China and India-Pakistan border were the real concern for India. To secure borders, more advanced defense technology is needed. Thus the Defense Research and Development Organization, DRDO, was set up in 1958. After its formation, it has developed several large programs and initial technology. Development in space technology for more advanced scientific research with the help of Dr. Vikram Sarabhai, the Indian Space Research Organization ISRO was set up in 1969. Aryabhatta, the first Indian satellite, was launched by Soviet Union in 1975. In recent times, ISRO has conducted 2 successful space projects, Chandrayaan and Mangalyaan, in 2008 and 2014 respectively. At present, our main priorities are Chandrayaan 3 and Gaganyaan mission. On this very note, I would like to end my speech. Thank you and have a wonderful day. Jay Karthike from Allen's House Public School.
Super afternoon to one and all present here. I am Jay Karthike of Ellen House Public School. Today I am going to tell you about space technology in independent India. Our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru said, science is not merely an individual search for truth. It is something infinitely more than that if it comes for the community. As India is celebrating 75th Independence Day, let us have a look about what were the major scientific and technological development during this period. Development of defense technology. Dr. Homi Bhabha has played a major role in the development of defense technology in India after independence. India has been attacked many times by its neighbors. Some of the major milestones of defense technologies development in India are 1958, the RDO was set up. The Defense Research and Development Organization was set up in 1958 to secure the borders of India with more advanced defense technologies. 1998, India conducted Pokhran's second test. On 11th and 13th May 1998, 24 years after the test of Pokhran 1, the Chief Scientific Advisor and the Director of Defense Research and Development Organization, DRDO, our Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. This was about development of India in defense. Now let us have a look about development of India in space technology. India has initiated some major space research program under the vision of some great scientists like C.V. Raman, Dr. Vikram Sarabhai, and Dr. APJ Abdul Kalam. Some of the major milestones of space technologies in India post-independence are 1963, first ever rocket launch. This was the first milestone in modern Odyssey. Dr. Vikram Sarabhai, and then he accomplished Dr. APJ Abdul Kalam. They both were the brainchild of this achievement. 2008, Chandrayaan-1 was launched. This mission was a major boost to India's space program as our country researched and developed its own technology. 2013, launch of Mangalyaan, one of the finest missions accomplished by ISRO, the Mars orbiter, also called Mangalyaan. The mission made India the first Asian country and the fourth most in the world after Roscosmos, NASA and the European agencies to get to the planet. India's economic progress has made its space program more visible and active as the country aims for self-reliance in space technologies. In 2008, India launched as many as 11 satellites, including 9 from other countries, and went on to become the first nation to launch 10 satellites on one go. Some of the upcoming missions of ISRO are Gangayaan. This project will demonstrate ISRO's capability for human spaceflight to low Earth orbit and safe return. Last but not the least, India's first mission to study Sun, Aditya L1. On this very note, I would like to end my speech. Thank you and have a wonderful day ahead. Jai Hind, Jai Bharat. Manish Singh from Allen House Public School. India, the second most populated country of the world and most densely populated country of the world, needed a system which can be used for defense, weather forecasting and communication. Good morning to one and all present here. I am Manish Singh of Allen House Public School, Vrindavan Yojana, want to speak on the topic Space Technology in Independent India. Space technology is the technology for use in space, astronautics or other activities beyond Earth's atmosphere for purposes such as space flight, space exploration, Earth observation and communication. Indian National Committee for Space Research was the first step of India in the field of space technology, which was formed under the Department of Space in 1962 by Dr. Sarabhai, who became its first chairman
In 1969, the Indian National Committee for Space Research developed and became Indian Space Research Organization. Dr. Satish Dhawan became its spearhead chairman after the unexpected death of Dr. Sarabhai. The first satellite which ISRO launched on its own was Rohini, which was launched in 1980. Under the leadership of Dr. Madhavan Nair, ISRO placed its Chandrayaan orbiter in the moon's orbit in its first try. The Chandrayaan-1 was launched on 22nd of October 2008, which stated orbiting moon on 8th of November 2008. Chandrayaan-1 was the first to detect water on moon. In doing so, India set a world record. The first interplanetary mission of ISRO, named Mars Orbiter Mission, famous as Mangalyaan, was launched on 5th of November 2013 under the leadership of Dr. Radhakrishnan, and it was successfully placed in the Mars orbit in 24th of September 2014. By doing so, India became the first country to reach the red planet in its first attempt. The Mangalyaan is still working in a good condition. In 2017, under the leadership of Dr. Kumar, ISRO placed 104 satellites in the Earth's orbit in a single mission, and in doing so, it set a world record. It broke the Russian record of placing 37 satellites in one go. Chandrayaan-2 is the second lunar exploration mission launched by ISRO after the Chandrayaan-1 under the leadership of Dr. Shivan. It consisted of an orbiter, lander, and a rover. It was launched on 22nd of July 2019. The orbiter was placed in Moon's orbit on 20th of August 2019. The lander and the rover were detached from the orbiter on 2nd of September 2019. Unfortunately, at the last stage of landing, the signal was lost and the lander crashed on the Moon's surface. Some of the major upcoming missions of ISRO are Gaganyaan, to send humans in space, Aditya, to study the sun, Chandrayaan-3 to study the south surface of the moon, and Shukrayaan to study the Venus. In such a small period of time, ISRO has made a number of achievements and proved that nothing is impossible. And now it is one of the top 5 government space research agencies in the world. I am proud on ISRO and I am proud on India. Jai Hind. Thank you. The next one is Arya Gupta from Central Academy, Janakipur. Good afternoon, honorable members of Executive Indian Society of Remote Sensing, my respected teachers and fellow friends. Today, I'm feeling proud and dignified to speak in front of great minds working together in field of space, as we are clubbed to share views on space technology in independent India. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, quoted by scholar leader Rakesh Sharma from space in a joint space program with Soviet Union. These words will always echo in my mind. As a young Indian, the term space always reminds me of ISRO, India Space Research Organization. ISRO, brainchild of Dr. Vikram Sarabhai, who is known as father of Indian space program. In 1960, when US telecasted the Tokyo Olympic Games across Pacific by Silicon satellite, Dr. Sarabhai came up with the idea of harnessing knowledge of space for India. Dr. Homi Bhabha and Dr. Sarabhai then
in 1962 formed an organization in Cosper. On 15th August 1969, ISRO was born from in Cosper. We proudly launched our first indigenous satellite in 1975, Aryabhat, using Soviet launch vehicle. Initial phase was hard on ISRO as we failed to launch in 1979, but we learned from our failures and first indigenous satellite Rohini 1 with SLV was launched. From ASLV in 1992 to PSLV in 1993, our experience was put on full-scale production of launch vehicle. Finally, PSLV was our workhorse launch vehicle, placing remote sensing and communication satellites into orbit. Then came era of GSLV, Geo-Synchronized Satellite Launch Vehicle, from 2001 to 2010. Finally, we achieved complicated but rewarding launch of putting 104 satellites in single launch in 2017. No one can forget Mangalyaan project of 2014, where we successfully completed Mars orbiter mission at 10 times lower cost, similar to Project US. Finally, I'm running out of breath counting the space achievement of ISRO, which is incomplete without mentioning the Gaganyaan project, when we can again hear the same quote from Moon, "Saare jahan se acha Hindustan hamara." Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Kumar from Central Academy. सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं जज्ञांश कुमार सेंट्रल एकेडमी जानकीपुरम विस्तार की कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी के समक्ष नेशनल रिमोट सेंसिंग डे के प्रतिष्ठित अवसर पर अपने विषय स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिपेंडेंट इंडिया पर कुछ तथ्य और अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्पेस प्रौद्योगिकी से हम क्या समझते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से तात्पर्य ऐसी प्रौद्योगिकी से है जिसका इस्तेमाल करके मनुष्य अपने वायुमंडल के परे देखने, सोचने एवं जाने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष यान, उपग्रह, अंतरिक्ष संचार, अंतरिक्ष प्रसारण, अंतरिक्ष में प्रणोदन और कई अन्य प्रौद्योगिकियां जिनके ढांचे का उपकरण और प्रक्रियाओं में समर्थन शामिल है। स्थलीय उपयोग के लिए कई सामान्य रोजमर्रा की सेवाएं जैसे रिमोट सेंसिंग, उपग्रह टेलीविजन, उपग्रह नेविगेशन सिस्टम और कुछ लंबी दूरी की संचार प्रणालियां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर गंभीर रूप से निर्भर हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो खगोल विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान इसी से लाभान्वित हैं। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कार्यक्रम का विकास 1980 में प्रारंभ हुआ, जब इसने श्रीहरिकोटा द्वीप से सफलतापूर्वक अपने उपग्रह रोहिणी 1 को लॉन्च किया। तब यह साबित करने वाला भारत छठा देश बन गया कि हम भी अपना उपग्रह स्वयं बनाकर पृथ्वी के ऊपरी कक्ष में भेजने की शक्ति रखते हैं। भारत में विक्रम साराभाई और सतीश धवन को भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के पीछे अग्रणी माना जाता है। अभी की बात करें तो भारत के अधिकांश अंतरिक्ष विकास कार्य जटिल अनुप्रयोग उपग्रहों और अधिक शक्तिशाली रॉकेटों पर केंद्रित हैं। देश के दो प्राथमिक हित रिमोट सेंसिंग, जिसके स्वर्णिम दिवस पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और संचार के लिए उपग्रह हैं जैसे मौसम की तस्वीरें, आपदा चेतावनियां और जमीन पर 552 टेलीविजन ग्रह और 164 रेडियो स्टेशनों में डाटा फीड करने के लिए उपयोग किया जाता है। कल ही हमने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया, जिसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव घोषित किया। इस मौके पर हम सभी को अपने देश के प्रति भक्ति दिखाने का मौका भी मिला। इसी मौके पर मैं अपने देश के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ योगदानों का वर्णन करना चाहता हूँ।
सबसे पहले चंद्रयान, जो कि चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इनसैट, जिसके प्रयोग से आज दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में संचार और प्रसारण के माध्यम उपलब्ध हुए। PSLV, जिसके कारण आज प्रभावी लागत में अंतरिक्ष में ज्ञान भेजना संभव हुआ। मंगलयान, जिसके कारण आज पूरे विश्व में हमारे देश का परचम लहरा रहा है। साथ ही भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने 106 उपग्रहों का एक साथ निर्माण करके इतिहास रचा। केवल यही नहीं, गगनयान, जिसके द्वारा हम एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन तैयार करने में जुटे हैं, उसकी भी नींव रखी जा चुकी है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम अपने देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देकर करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं के निरंतर परिश्रम के कारण भारत आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इस उत्तम स्थान पर मौजूद है। विक्रम साराभाई ने भी अपने देश के वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के परिणामों पर अपने महल की धूल को गिरने देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Pioneer Montessori School, Jankipuram. The next one is Ravi Shankar. Be ready. Sneha Yadav, Pioneer Montessori School, Jankipuram. A very good afternoon to everyone. Today I, Sneha Yadav of Pioneer Montessori School, Jankipuram, is going to throw light on the topic space technology in independent India. Aim for the moon, my scientists all, discover and invent, it's man's call. Get your space shuttle ready to land, so grab the moon rocks if need by hand. Aim for the stars and you will land in Mars, ambitions must be tall. Don't stop with cars, don't stop with cars, and don't stop with cars. As India completes 75 years of its independence, it is time to introspect the country's space program that has grown and evolved significantly in the last decades. The program originally focused on developing space assets that provided direct development benefits, for example, telecommunications that helped both in improving communication facilities and giving direct assistance to the India's farmers. But over time, India has shifted a part of its focus towards space exploration and high-profile missions. This includes, for example, India's Mars and Moon exploratory missions. Today, we all are making our mark globally in the fields of agriculture, sports, culture, economic, defense, and in researches. In the field of space science, we have got self-reliance due to the tireless hard work of our scientists and a consistent space science policy of the Department of Space. The Indian National Space Research Committee was formed by the Government of India in 1962. With the efforts of space visionary Dr. Vikram Sarabhai, on 15 August 1969, the Indian Space Research Organization ISRO was established. In the 52 years historic space journey of starting from launching the first satellite Aryabhat, today we are able to dream of launching Chandrayaan, Mangalyaan and Gaganyaan due to our self-reliance in the space science programs. The Indian space program has been orchestrated well and had three distinct elements: satellites for communication and remote sensing, space transportation system and application programs. Two major operational systems have been established: Indian National Satellite for telecommunication, television broadcasting and meteorological service, and the Indian Remote Sensing Satellite for monitoring and management of natural resources and disaster management support. Both industries are currently predominantly operated by ISRO. India wants to launch its first manned space mission in 2023 to mark its 76th anniversary of nation's independence, codenamed Gaganyaan, a space vehicle in Sanskrit. The project has a budget of almost $1.5 billion. 2 or 3 people are spent around 7 days in low Earth orbit. ISRO says the mission is the first step towards building India's own space station, which it plans to do in 5 to 7 years. India is a leader in satellite launches for other nations. There are more than 2,000 working satellites belonging to US-based organizations. 300 originate from China and roughly half that number in Russia.
Clearly, India is a leader in this segment. For the nation, as far as space is concerned, sky is not the limit, sky is not the limit, and again, the sky is not the limit. Thank you and have a nice day. Shankar from Pioneer Montessori School, Shankar. सभी उपस्थित गणमान्यजनों को मेरा प्रणाम। मैं रविशंकर पाइनियर मोंटेसरी स्कूल का छात्र आज आप सभी के समक्ष रिमोट सेंसिंग डे के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। तोड़ दो या क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है, जा रहे जिस पंथ से युगकल उसका छोर क्या है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। सभ्यता की शुरुआत से ही मानव अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएं करता रहा है। इन रोमांचक कल्पनाओं में अंतरिक्ष कभी अध्यात्म का विषय बना तो कभी कविताओं और दंत कथाओं का। पारलौकिकतावाद से प्रभावित होकर कभी मानव अपनी कल्पना के स्वर्ग और नर्क अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए तो कभी मानवतावाद के प्रभाव में पृथ्वी को केंद्र में रखा और अंतरिक्ष को उसकी परिधि मान लिया। धीरे धीरे जब सभ्यता और समझ विकसित हुई तो मानव ने अंतरिक्ष के रहस्य को समझने के लिए प्रेक्षण यंत्र बनाए, जिसमें दूरबीनें प्रमुख थी। इसके बाद प्रारंभ हुआ अंतरिक्ष को समझने का प्रयास। इस क्रम में आर्यभट्ट से लेकर गैलीलियो, कोपरनिकस, भास्कर एवं न्यूटन तक प्रयास करते रहे। अंतरिक्ष को समझने के प्रयास में भारत भी पीछे न रहा, जिसकी शुरुआत डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की। विक्रम साराभाई को सपने देखने वाला शख्स कहा जाता था। वह भारतीय भौतिक विज्ञानी और उद्योगपति थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत और भारत को विकसित करने में मदद की। भारत के आजाद होने के बाद 1947 में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL की स्थापना की। भारत में व्यवसायिक प्रबंधन शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए साराभाई ने 1962 में अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। उनकी देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाब देखने की चाहत की वजह से सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान की समिति का गठन हुआ, जिसके साथ ही भारत में अंतरिक्ष क्रियाकलापों का श्री गणेश हुआ। उसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्य रेखीय प्रक्षेपण स्टेशन टंडस की स्थापना का काम भी प्रारंभ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों भारतीय अंतरिक्ष संघ के उद्घाटन हुआ। विकासशील अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी भारत ने न सिर्फ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रभावी रूप से विकसित किया है, बल्कि उसे अपने तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल भी किया है। इतना ही नहीं, आज भारत अन्य देशों को भी अनेक कार्यक्रमों से संबंधित अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है। आशा है आने वाले वर्षों में भी भारत ऐसे ही उन्नति करता रहेगा। मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। झुक गए होंगे चांद सितारे भी तेरे नाम से, जब आसमां में तिरंगा फहराया होगा बड़े शान से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। The next participant is Ishika Singh from Allen House Public School. The development of a nation is intimately linked with the understanding and application of science and technology by its people. These are the words said by Vikram Sarabhai. So good afternoon everyone. Here I am Ishika Singh from Allen House Public School. Vikram Sarabhai, who is also known as the father of Indian space program, was an Indian physicist and astronomer. He initiated space research and helped develop nuclear power in India. He was awarded with Padma Bhushan in 1966 and Padma Vibhushan in 1972. The establishment of ISRO was one of his greatest achievements.
Sarabhai successfully convinced the government about the importance of space program for a developing country like India. After the Russian Sputnik launch, a series of 3 Earth satellites, with the vision of harnessing space technology for the national development, the Indian Space Research Organization, ISRO, was established in 15th August 1969, with headquarters in Bangalore. It operates under the Department of Science, which is directly overseen by the Prime Minister of India, and the chairman of ISRO acts as the executive of DOS as well. ISRO has upheld its mission of bringing space and service for the common man, the service of the nation. In this process, it has become one of the 6 largest space agencies in the world. To achieve self-reliance, it was very essential to develop efficient and reliable launching systems. For example, Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV. The failed PSLV went to become the favored carrier for satellites of many countries. Firstly, due to its reliability, and secondly, due to its cost efficiency. The geosynchronous satellite system, also known as GSLV, was developed keeping in mind with the heavier and more demanding geosynchronous satellite system. The Aryabhatta spacecraft, named after the famous astronomer Aryabhatta, was India's first satellite. It was developed and fabricated in India and was launched with the help of Soviet Cosmos 3M rocket. Launched on April 16, 1975, its weight was of 360 kgs. Its mission life was of 6 months and its orbital period was of 17 years. ISRO has carried out 114 spacecraft missions, 83 launch missions, and has planned several missions like Aditya L1, Gaganyaan, and Mangalyaan 2. If we talk about lunar missions that are conducted by India, Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 are already conducted, and Chandrayaan 3 is going to be conducted in the first quarter of 2023. It will be the mission repeat of Chandrayaan 2. If we talk about the planned missions, Aditya L1 will be launched in 2023, and it will be the first Indian observatory class mission to study the corona using solar coronagraphy. Chandrayaan 1, 2 and 3. Gaganyaan 1, 2 and 3. Gaganyaan is an orbital vehicle which will carry 3 people to space. Gaganyaan 1 and 2 will be trial flights, and Gaganyaan 3 will carry 3 people to space. I would like to end my speech with this. Thank you. Thank you, all the participants. सभी ने बहुत अच्छा किया. Now we have complete the allocation competition. अब मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर रितांश जी को बैक and date for the result also. थैंक यू सो मच पूनम मैम. कार्यक्रम की अगली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर अमित सिन्हा सर और श्री SKS यादव सर को कि आप अपने नेतृत्व में हम लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित विभिन्न कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थाओं से आए हुए विद्यार्थियों का क्विज प्रतियोगिता सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराने की कृपा करें. Good afternoon, students. I am Amit Sinha and today I am your quiz master. I will test your knowledge, skill and mental toughness while giving you the answer. But I would like to make one request. When I ask any question, do not shout in giving the answer.
just raise your hand. We will come to you. Just give the right answer or wrong answer, whatever you know. Your name and your school. Got it? कौन सपोर्ट करेगा मुझे? माइक For every right answer, you will be divided on the spot. Are you ready? Question number 1. When we are celebrating National Remote Sensing Day and why? Listen the question first. When we are celebrating National Remote Sensing Day and why? दोनों आंसर होने चाहिए. National Remote Sensing Day is celebrated on 16th August and it is. बैठ जाइए. National Remote Sensing Day. National Remote Sensing Day is celebrated on 12th August on the occasion of birth anniversary of Dr. Vikram Sarabhai. Your name and your school. Very good. हाँ अभी तुरंत प्राइस है. प्राइस दो और फोटो लो. फोटो ले लेना. इधर इधर. Name the birth year of Professor Vikram Sarabhai. अरे इसमें तो छोटी बच्ची है. The birth year of Vikram Sarabhai is 1990. Very good. Your good name? Rishita Chawla Modern School. Very good. Indian Space Research Organization was established in which year? August 1969. बैठ जाइए. August 1969. इन्होंने क्या बताया था? ठीक है, मुझे सुनने में गाली हो रही है. उनका आंसर सही है. Srivastava Central Academy School. Okay, thank you. When was the first ever satellite was launched worldwide? November 1963. Wrong answer. Sputnik 1 1957. Which one? Sputnik 1 1957. Date. October 4, Sputnik 1 1957. Very good. Right answer. Singh Modern School. इधर आगे आगे सबसे मिलो. What is the name of Indian first satellite and when it was launched?
April 1975. Very good, right answer. Janvi Singh from St. Mary's Inter College. Next question is, what is the full form of GSLV? Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Very good. नाम बताइए, स्कूल बताइए. Satellite launching station is located at which place in India? श्रीहरिकोटा. कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश. Very good. अजहर सिंह एलेनॉर पब्लिक स्कूल. At which place in India satellite signals are being received in India? At which place in India? Bangalore. No. IRS. IRS? Yes. ये क्या है? IRS, sorry. IRS. बैठ जाओ बेटा. Nobody knows? Trivandrum. नहीं, wrong answer. हैदराबाद. Very good. Precisely बोले कहाँ पे? हैदराबाद में कहाँ पे? IIRS. नहीं. ठीक है, इनका आंसर सही है, इनको प्राइज दे सकते हैं. अपना नाम बताइए. उत्कर्ष वर्मा पाइनियर मॉडरेटरी स्कूल विकास नगर. एग्जैक्ट लोकेशन इज शाद नगर, हैदराबाद. Name the first indigenous satellite launched by India successfully in the space and when it was. रोहिणी. ये तो ईयर है, नाम बताइए. IRS 1A, March 17, 1988. Very good. Very good. हमारे बीच हमारे विभाग के सचिव महोदय पधार चुके हैं. कृपया तालियों से स्वागत करिए उनका. मैं माननीय सचिव महोदय को बताना चाहता हूं कि आज सुबह से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम हम लोग नेशनल रिमोट सेंसिंग डे सेलिब्रेशन के तहत कर रहे हैं और इसको हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी सम्मिलित किया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग ने आज एलोकेशन कॉन्टेस्ट किया था सर. उसमें हमने टॉपिक बच्चों को दिया था स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिपेंडेंट इंडिया.
तो उस पर करीब 16 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उन सबने अपने अपने विचार रखे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और अभी हम लोग उसका रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस होगा और उसके बाद हमने ये ओपन हाउस क्विज स्टार्ट की है जिसमें हम बच्चों से रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी स्पेस प्रोग्राम के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसके सही जवाब उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम भी जारी है। आपका एलोकेशन वाला जो कितने देर में आ रहा है, वही आपका मेन इवेंट था? मेन इवेंट है, ये भी इवेंट है सर। हाँ मतलब वो मैं क्योंकि वो 15-20 मिनट बहुत स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगा कुछ आपको लेके लगेगा कि मैंने 15 मिनट का समय दिया, मगर वो जो आना जाना और सब मिला करके 1.5 जी सर। मगर मैं बोल रहा हूँ मुझे 15-20 मिनट की हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ वो 15-20 मिनट वो मेरे से मेरी बात। ठीक है सर, ठीक है। सर रिजल्ट रेडी है, तो उसको स्टार्ट कर दें। मेरे ख्याल से उसको कर ले, फिर बाकी लोग हैं इसलिए ठीक है, क्विज को थोड़ी देर के लिए बीच में ब्रेक करते हैं क्विज के लिए, क्विज आगे कंटिन्यू करेंगे। रिजल्ट्स आप क्विज में क्या दे रहे थे? क्विज में क्या हर बच्चे को एक पेन दे रहे थे। बाकी और कुछ ट्रॉफी देना है, एक आध क्विज का एक आध क्वेश्चन करेंगे। What is the full form of GPS? ये आसान है, ये आसान सवाल कर रहे हैं। चलिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वेरी गुड। 10th शिवम यादव क्लास 10th बी। Name the ISRO mission on Sun. जिसको नहीं मौका मिला उसको जरूर दिए। मंगलयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन। आदित्य। आपका नाम क्या है? त्रिपाठी, इंग्लिश वाली पब्लिक। वेरी गुड। कर लें? ठीक। अभी हम क्विज के लिए ब्रेक कर रहे हैं। रिजल्ट दीप जलन है। मैं माननीय सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का ऑफलाइन में शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन। हो दीप प्रज्वलित ज्ञान का युग, सबको प्रकाश का लाभ मिले। हम सभी इस संस्कृति से सदैव जुड़े रहना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। और आइए चलें अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। लैम्प लाइटनिंग is supposed to bring in a lot of positivity in the entire atmosphere where it is lit. मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार सर को कि वो विक्रम साराभाई और चतुर्वेदी सर को माल्या अर्पण कर कृपा करें। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे केंद्र निदेशक महोदय सर को कि वो हम विक्रम साराभाई
सर को और चतुर्वेदी सर को माला अर्पण कर एक कृपा करें। मैं डॉक्टर फूलकौर सर से निवेदन करती हूँ कि वो श्री आलोक कुमार IAS सर को बुके देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। थैंक यू सर। हमारे बीच एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। मैं माननीय सचिव महोदय को बताना चाहूँगा कि एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में लगभग 5-6 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और उसके करीब 17 बच्चों ने इसमें भाग लिया। तो जो छात्र इसमें तीसरी पोजीशन पे आया है उनका नाम है मिस्टर जय कार्तिकेय, एलन हाउस पब्लिक स्कूल।